Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are fine. Students, today we are going to start our fourth chapter. The name of this chapter is Minerals and Natural Resources of the Muslim World. What are minerals and what are natural resources of the Muslim world? What are the uses of natural resources and what are the properties of natural resources? I will explain you each and everything in this chapter. Okay? What are natural resources? Natural resources क्या होते हैं? Natural resources are resources that exist without any action of humankind. This includes all valued characteristics such as magnetic, gravitational, electrical properties and forces etc. Natural resources actually they are naturally made. ये इंसानों के हाथ से बने हुए नहीं होते, ये कुदरती तौर पर होते हैं और इंसान इसे अपनी ज़रूरत के जिस नेचुरल रिसोर्सेज की इंसान को ज़रूरत होती है वो उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करता है. ठीक है. नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. बेसिकली दे आर यूज्ड एज फ्यूल for example coal, petroleum and natural gas, and they are used in industries for making medicines, fertilizers and many other items, for example iron, bauxite, mica, gold, silver etc. And what is minerals? A mineral is a solid chemical compound that occurs naturally in pure form. All rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances, have certain physical properties. तो ठीक है. अच्छा, ये minerals होते हैं. Now I am going to show you how minerals look like. You can see the picture of minerals. In this chapter I will tell you the world ranking. I mean कि मुस्लिम कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम्स की उनमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स फेमस है और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग कौन सी है. लाइक अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल कोल है, कोल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है, तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ में किस रैंकिंग में आता है. जैसे ईरान है और जैसे सऊदी अरब है और अरब कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, तो वो दुनिया के सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो किस रैंकिंग पर आता है. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न minerals and natural resources of the Muslim world. Okay, now I'm going to start reading. Okay, now I'm going to start reading chapter 4, Minerals and Natural Resources of the Muslim World. It is on page number 17, Oil and Natural Gas. While so much of the Muslim world is not very fertile for agriculture because of the lack of water or poor soil, it is by far the most important region of the world for producing oil and natural gas. These are extremely valuable for export as the whole world is desperate for petroleum and also for helping to develop industries in the Muslim world. This area produces a third of the world's output of oil and 15% of the natural gas. More of these energy sources are being discovered all the time, especially gas in Pakistan. जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आजकल जो ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो बहुत कम मुस्लिम ममालिक में मौजूद है. यानी मुस्लिम ममालिक में ऑयल तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन नेचुरल गैस जो है वो मुस्लिम ममालिक में बहुत कम मौजूद है. और जिन ममालिक में ऑयल और नेचुरल गैस ज़्यादा मौजूद है वो ममालिक जो हैं वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, क्योंकि आजकल जैसा कि आप लोग को पता है कि ऑयल जिस कंट्रीज़ से निकलता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरबिया हो गया या कतर हो गया, जितने भी अरब ममालिक हैं, अल्लाह ताला ने जिनको ऑयल की नेमत से अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी सॉइल इतनी फ़र्टाइल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस नेमत से नवाजा है कि उधर से ऑयल जो है वो बहुत वाफिर मिक़दार में निकाल के दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल. ठीक है. फिर जिससे उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और स्ट्रॉन्ग है. ज़्यादातर अरब ममालिक की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही. ठीक है. तो
اس طرح جبکہ نیچرل گیس جو ہے وہ ابھی بھی بہت سارے کنٹریز میں، مسلم کنٹریز میں نیچرل گیس نہیں ہے موجود. پاکستان میں تو موجود ہے. پاکستان میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے علاقوں میں نیچرل گیس موجود نہیں ہے. اسی طرح سعودی عرب میں بہت زیادہ نہیں ہے، اور دبئی میں جو یو اے ای کے سائڈ ہے ادھر اتنی زیادہ نہیں ہے. آئل تو ہے لیکن نیچرل گیس اتنی زیادہ نہیں ہے. Iraq has huge reservoir of oil, third in order after Saudi Arabia. Iran is second, but today for political reason Iraq is banned from exporting more than a small amount. If Iraq were allowed to export all that it was able to, the Islamic world would produce more than half the total world supply. یعنی عراق جو ہے وہ آئل ریزرور کا تھرڈ نمبر پر آتا ہے، اس کے بعد سعودی عرب کے بعد. فرسٹ نمبر پہ سعودی عرب آتا ہے، سیکنڈ نمبر پہ ایران آتا ہے، اور تھرڈ نمبر پہ عراق آتا ہے. لیکن کچھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے عراق جو ہے، عراق کو بین کر دیا گیا ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا آئل، اور اس سے کوئی کنٹری آئل بائی نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر عراق کو الاؤ کر دیا جائے، the Islamic world would produce more than half the total world supply. Other states such as Bahrain, Qatar and Abu Dhabi in the UAE also produce large amount of oil. Abu Dhabi has 9% of the world's oil reservoir and 5% of the natural gas reservoirs. In 2007, Pakistan produced about 22.6 million barrels of crude oil. This may seem a large amount, but remember that Saudi Arabia pumps out this amount every 2 days. Pakistan does, however, have some very valuable natural gas fields. کچھ اور اسٹیٹس ہیں جیسے بحرین ہو گئی، قطر، ابو دھابی، یو اے ای میں ابو دھابی ہے، اس میں لارج اماؤنٹ میں آئل جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. ابو دھابی جو ہے وہ یو اے ای کا ہی ایک اسٹیٹ ہے. جیسے یو اے ای میں 7 اسٹیٹس ہیں، اس طرح اس میں سے ایک اسٹیٹ ابو دھابی ہے جس میں 9% آف دا ورلڈ